Yeah, hi everyone. A very good afternoon. Am I audible and visible, all of you? Good afternoon, everyone. Can you hear me, guys? So, yeah, this is for all the ones who are preparing for the Himachal HPRCA. And today we are going to start with the set of 50 questions, particularly. I'll try to cater. More will be the questions that we are able to practice today. I'll teach you the rules along with those. क्या क्या रूल्स बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, अप्रोच कैसे करना है. एंड द सेट इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड वन. आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे. We'll start with vocabulary, spotting errors, fill in the blanks, jumbled, and then there will be RCs also. The complete documentation will be uploaded once the class is over. तो आपको documentation भी मिल जाएगा. So you can readily solve the questions along with the solutions. Solutions also I'll provide it in your groups so that you can just go accordingly. So yeah, hey everyone. Everyone is ready now? Good to go with the class, all of you? Yeah, chalo. Let's start with the very first of English question which is there in front of us, okay? So we are going to start, the very first section is vocabulary based, which is going to be idioms होते हैं vocabulary में, आपके आ जाते हैं synonyms आ जाते हैं, antonyms आ जाते हैं, one word substitution आते हैं, and even spellings के questions भी आते हैं, which comes in the category of complete vocabulary. पहला question आ जाता है आपका, that is, when the inspection team discovered a serious defect shortly before the deadline, the manager decided to bite the bullet and report it immediately. The idiom means that he should or he decided to. Now, what is the meaning of bite the bullet? What is the meaning of bite the bullet? Anyone? You have four options. First is face a difficult situation with courage. Second is avoid responsibility for the defect. Third is delay the report until the deadline passed. And the last is accept defeat without making any effort. What will be the answer, guys? A. So bite the bullet is, when you bite the bullet, obviously it is going to be hard for you to chew the bullet. We don't chew it in real sense, in literal sense. Bite the bullet means that is to face something difficult in our life, right? To face the difficult situation, but with really courage. That is, whatever happens, I'm ready to face it, is called as bite the bullet. Okay. The second we have is the witness's account should be taken with a pinch of salt. Taken with a pinch of salt because several details could not be independently verified. The idiom means that the account should be. How would the account should be taken? Taken with the pinch of salt. What does it mean? Salt is when it is related to something realistic. Salt, whenever some idiom comes of salt, that is related to that your honesty, your things that you should be working with that person with great willingness. Now here you have take with a pinch of salt, accepted as completely accurate, treated with some doubt or caution, repeated exactly as it was heard, rejected without any consideration. Very good, guys. That is B option. That is, you treat, you check, you go with the evidence, then only you accept that particular thing. That means take a pinch of salt, मतलब ध्यान से देख के चलो कि क्या वो चीज ठीक है या नहीं है. तो एविडेंस को पहले देखो और उसके बाद आप चीज पे विश्वास करो दैट वो चीज अच्छी है, सही है या नहीं है. Two idioms we learned right now. One is bite the bullet, to face the difficulty with some kind of a courage. Second is take with a pinch of salt, मतलब ध्यान से चीज को करना, proper evidence के साथ ही believe करना किसी को. Let's go with the third one. That is, after the first design failed, every safety test, the engineers had to go back to the drawing board. Now everything failed, the safety test failed. They have to go back to the drawing board. And the idiom means that they have to abandon the project. Abandon means when you leave something permanently, when you quit something, that is abandon. Repeat the same unsuccessful procedure. Are you going to repeat it? Third is begin planning again from the start. It may be. And that is submit the design without further testing. You submit it and you don't test it. What will be the answer, guys? What will be the answer, guys? C option. That is, it is back to the drawing board or back to the square one. That means you are going back to the initial stage. So it would be begin
from the start. Okay, when you begin something from the very start, it is called as back to the drawing board. We have the fourth one now, that is choose the word closest to prudent in the sentence. It would be prudent to inspect the mountain road before allowing heavy vehicle to use it. Now, if I want any road to test कि एक vehicle आ रहा है, prudent है, क्या वो चीज ठीक है हमारे लिए या नहीं है. So what is the meaning of prudent? Careless and hurried, wise and cautious, bold but unreasonable, or uncertain and confused. What would be the answer, guys? What is the meaning of prudent? You know, when you compliment someone, he's a very prudent fellow, that means he's a very wise fellow, he's a very intelligent fellow. कोई बहुत intelligent है, बहुत wise है, उसे भी आप prudent बोलते हो. तो अगर आप बोलना चाहते हो कि एक अच्छी चीज है, हमें माउंटेन रोड को इंस्पेक्ट करना चाहिए उससे पहले उस पर कोई हैवी व्हीकल जाए, तो मतलब आपको वाइज और कॉशियस, मतलब ध्यान से वो चीज करनी चाहिए. द ऑप्शन बी इज अ राइट वन. आई होप यू आर क्लियर विद द फोर वंस. द वेरी फर्स्ट वी डिड वाज बाइट द बुलेट, फेस द थिंग विद डिफिकल्टी. सेकेंड इज टेक अ विद पिंच ऑफ सॉल्ट, दैट इज आप बहुत ध्यान से किसी चीज को करते हो, दैट इज एविडेंस के साथ बिलीव करते हो. Go back to the drawing board is also called as go back to the square one. When you start something from the very initial phase once again, and then as prudent means when someone is very wise, very intelligent, that is a person called as prudent. Next, we have the fifth question in front of us. Now you have to choose the word closest in meaning to meticulous in the sentence. You know, there are terminologies like diligent, intelligent, hardworking. Similarly, meticulous means, what is the meaning of meticulous, guys? The technician maintained the meticulous record of every reading taken during the experiment. जब आप किसी चीज का रिकॉर्ड रख रहे हो, मतलब बहुत ध्यान से वो चीज कर रहे हो. मेटिकुलस का मतलब ये होता है जब आप कोई चीज को बहुत ध्यान से करते हो, बहुत हार्डवर्क के साथ करते हो और विद कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करते हो. So the answer would be extremely careful and precise. Brief and incomplete, no, that is a negative one. Careless and informal, again a negative one. We are left with ordinary and predictable or extremely careful and precise. So it will be extremely careful and precise, the way everyone answered. Good to go with it. Okay. The next we have is 6-1. What is the meaning of the word obsolete? Very, very important. It has been asked in multiple papers till date. Obsolete. That is, you have to tell. First, understand. Obsolete means something that is outdated. Something that is not in fashion these days is called as obsolete, right? Outdated. Now, what would be the answer in this case? Outdated is in 1. It is outdated and no longer used. Answer C. The rest are expensive to operate. No. Temporary unavailable. That won't be the answer. Difficult to repair. Repairing की कोई बात नहीं होती है. So एक word आता है obsolete, बहुत पूछा जाता है. The other word which I'll ask is conceal. What is the meaning of the word conceal, guys? Conceal क्या होता है? Hi everyone. What is the meaning of conceal now? This has also been asked multiple times. Same way, conceal is a word which has been asked multiple times in the papers. What is the meaning of the word conceal? Okay. Hide karna. Okay, yeah. Conceal is when you hide something and the opposite will be reveal, right? Opposite क्या आ गया उसका? Hide करना का reveal करना आ गया. Next we have the 7th one. What is the 7th one now? Choose the word opposite to sporadic in the sentence. The village experienced sporadic interruptions in electricity during winters. What is the meaning of the word sporadic? What is the meaning of the word sporadic? Anyone? The village experienced sporadic interruptions in electricity during winters. मतलब विंटर के टाइम पे बहुत ज्यादा इंटरप्शंस हो रही थी. स्पोरेडिक का मतलब क्या हो गया? बार बार कोई चीज होना. इज इट कंटिन्यूअस, अनएक्सपेक्टेड, ओकेजनल के ब्रीफ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोरेडिक? क्या आ जाएगा? रिपीटेड होना या क्या चीज आएगा?
देखो, if it was summers ना, I would have given it out. Summers में जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो बार बार जाती है, ठीक है, इट इज रेगुलर. स्पोरेडिक आ जाता है जब कोई चीज तो जा रही है बट इट इज नॉट लाइक रेगुलर इंटरवल्स. इट इज नॉट एवरी टाइम बट इन अ पीरियोडिक मैनर कि चलो 4 दिन बाद चली गई, इरेगुलर हो गया, दैट इज दैट. तो इन विंटर्स इफ द लाइट गोज इवन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, नॉट इन रिस्पेक्ट टू द समर वन. Similar it is, the village experience sporadic interruptions in electricity during winter. कभी कभार लाइट जाती है, that is occasional will be answer, right? It is not continuous, it is occasional. Sporadic means it happens not regularly, but it can be in a periodically way, right? It can be 4 days and 5 days, it can be like this. Next we have is eighth one, hostile. Tell me eighth one, what is the meaning of the eighth one? Perennial difficulty. Which perennial difficulty? Perennial is something that is permanent. Ephemeral is which is temporary. Here it will be ephemeral, which is temporary in nature. Perennial is a permanent one. Okay, that is a way. It is a difference. It's a complete different word. Now, if you have hostile, you have to find opposite now. Hostile is when someone is very arrogant to you, someone who is not in a good behavior with you. That is a hostile person. The opposite of it would be cordial, suspicious, aggressive, or indifferent, guys. What will be the answer? Now, obviously, suspicious is when you doubt someone, right? It will be a doubting one. Aggressive when you're angry in that case. Indifferent when it does not matter much to you. You're indifferent to that situation. That means it does not matter. So the very first answer is cordial. Cordial means you have positives, healthy relations with someone. That is a cordial and a happy relation. So the opposite of hostile, which means unfriendly, cordial is when you care and you are compassionate for someone. Okay. Now, the next we have is choose a word opposite in meaning to diminish in the sentence. Okay, diminish is, what is diminish, guys? Diminish का मतलब क्या होता है? Dim कर दो, dim भी कम होता है ना? Like dim the lights, you say that. That is, you have to lower down its intensity. Similarly, diminish का मतलब क्या हो जाएगा? कम करना. Regular maintenance can prevent the efficiency of a machine from diminishing over time. What will be the difference of it? The opposite you have to find in this case. So it will be, if I have to diminish, opposite would be uski intensity ko बढ़ाना. Intensity को बढ़ाना किसमें? Reduce तो कम हो गया. Conceal, hide करना हो गया, which I taught you. It is going to be asked in multiple options. Delay, दूर से रोकना. Augment is to increase. So the opposite of diminish is to increase. Augment is the answer. Good one, guys. I think C everyone read C only. Now we have the 10th one, that is a person who can speak and use several languages fluently is called. What is that person called? जो बहुत सारी languages को बोल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? Polyglot कहते हैं, monologue कहते हैं, linguist कहते हैं, orator कहते हैं. Linguists, I tell you that if you do scientific study of any word, I tell you, suppose I give you run, this is run. But in linguistic, it will be this way. This is scientific study and you learn the pronunciation of the words that is coming in the linguistics. So we are not learning about several languages. Even a person who knows good pronunciation, he can be a linguist because he's studying the language in a scientific way. Orator is one who speaks in a very proficient manner. He's a very good orator. Shashi Tharoor is a good orator, great orator actually. So that is when we say उनके oratory skills, narratory skills बहुत अच्छे हैं, बोलने का way बहुत अच्छा है. नेक्स्ट वी हैव इज मोनोलॉग, गाइस. मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? जब एक ही पर्सन अपनी सारी की सारी स्टोरी को बताता है, दैट इज कंप्लीट मोनोलॉग. दो पर्सन की कन्वर्सेशन नहीं है, एक ही पर्सन ने सारी स्टोरी सुनाता है, कोई बैकग्राउंड की स्टोरी बना रहा है, दैट इज मोनोलॉग. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन वर्ड, दैट इज पॉलीग्लॉट. Polyglot is a word which states about a person who can speak and use several languages. Is this clear now? 10th one is clear, guys? Yes or no? Clear everyone with the 10th one? Okay, that's great. Let's go with the 11th now.
A person who writes, edits, or compiles a dictionary is called what? What is a person who compiles, edits, or you can say just puts together all the things together? It will be, is it a biographer, lexicographer, stenographer, or calligrapher? Which one it will be? Biographer is biography word, you have heard about it. One who tells his own story is autobiography. If I'm writing the story of someone's life, it will be biography. Calligrapher, oh, who have great writing skills, that is called as calligraphy. Aapka writings bahut acha hai. Steno, you know about it. And the last we are left is lexicographer. This is the right word. And this is a person who compiles dictionary and who writes, edits, or compiles a dictionary. Good one. Go for the 12th one now. A person who walks about while asleep is called. Some people have an habit of walking when they are in the sleeping mood, है ना? नींद में चलने की आदत होती है. What is that person? Who is that person called actually? Is it insomniac होता है जिसको नींद नहीं आती है? Insomniac is not the right word, guys. It is one who does not get good sleep. जिनको रात को नींद नहीं आती है, that is insomnia. Okay? You're left with optimistic is a positive person, right? Hypnotist तो हो जाता है, hypnotize कर लेना. आप किसी की बातों में आ जाते हो, hypnotize देखा होगा, बहुत बार आता है. Hypnotize is a different word, but that is one who cannot, you can say sleep and he walks while sleeping. That is somnambulist. That is somnambulist, okay? This is related to your one-word substitution. Very nice. A1 is the right word, guys. Let's go with the next one. This is your 13th. Choose the correctly spelled word to complete the sentence. The officer was praised for her dash examination of every safety document. What would be the answer? Now, he was praised for his, we say it out as A option, consciousness, conscientiousness. What is the word? Here it is also wrong pronunciation of it. What will be the right word, everyone? What will be the right of 13th? It will be conscientious. That is C-O-N-S-C-I-E-N, and at the last it will be T-I-O-U-S. The B1 is right word. It refers. Now this is one is just to confuse you guys. C-I-O-U-S. T-I-O-U is right, but it will be carrying scientious. S-C-I-E-N-T-I-O-U-S is the right word. Okay, go for the next one now. You have to remember the spellings, and the most important spelling document is already there. Go for the 14th one now. Choose the correctly spelled word to complete the sentence. Reliable communication is dashed during a large-scale emergency operation. Reliable communication is? Which one will be the word, guys? Reliable communication is dashed during a large-scale emergency operation. When there is an emergency operation, obviously, the communication is important. And your word indispensable also means something that is very, very important for you guys, right? So indispensable means important. And what is the spelling of indispensable? At the last, it will carry A-B-L-E. Able is a word, right? So what will be the answer in this case? Indispensable. This one is a right word, okay? Indispensable. At the last, able is important. Clear with this word also? Yes or no? Indispensable. Okay. Now let's go with the next one, 15th one. Choose a correctly spelled word to complete the sentence. The sudden dash of cracks in old bridge forced the authorities to close it immediately. Again, this is from the vocabulary part, the last one, the spellings one. What will be the spelling of occurrence? Remember, whenever you say occurrence, it will carry O-C-U-R-R-E-N-C-E. Occurrence. That is the spelling, right? Okay, guys. I'll speak it in bilingual now. आपको occurrence के spelling बताने क्या आ जाएंगे? Occurrence के spelling. अक्कर बोलोगे O-double-C-U-R आ गया.
उसके बाद डबल आर कर दो, अकर रेंस, तो ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई। कौन सा आंसर बनता है हमारा? सी ऑप्शन इज अ राइट वन। अब आ जाता है मेन पार्ट, दिस वाज वोकैबुलरी, जो आपका ज्यादातर लर्निंग पार्ट आ जाता है। स्पॉटिंग एरर्स में आपके रूल्स होते हैं, स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, देयर इज अ 100 rule complete video of mine where I have explained all the rules of English. Please watch and refer to that video. It will help you to go through all the spotting errors and fill in the blanks because वहां पे सारे rules explain किए गए हैं. Now let's get with the spotting errors. आपको part identify करना है, कौन सा गलत है यहाँ पे. Okay, so tell me, the bouquet of roses kept on the table were presented to the chief guest by the students at the conclusion of the annual function. क्या आ सकता है इसमें आंसर? Take your time and tell me. The bouquet of roses, is it a collective noun? Here it will be bouquet of roses. Bouquet of roses is a collective noun जिसे टेबल पर रखा गया था. It is singular. So why we are using were presented? It will be was presented. सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? was यूज करते हैं. प्लूरल होता तो हम were यूज करते. तो ऑप्शन बी is an error and the error is it should not be were presented, it should be was presented. Very good. Okay, go for the next one now. Neha has been attending the coaching classes since last 6 months because she wants to improve her performance in the board examination. What will be the answer now? You remember that I gave you a logic. What is the difference between since and for? Since is never used with 6 months. Remember it out. It should be since, the should not be there. It can be any year, since January, since you can say 1947, it can be anything. 6 months and everything will carry for with it. So there is an error in the usage of since and for. And also remember that we don't use since the last month or since the last 6 months, right? It should be since last month or since you can say any time duration should be there. So this has an error. बी पार्ट इज अ रॉन्ग वन. ओके, तो बी में एरर कैसे है? सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता था? सिंस वहां पे लगता था जहां पे कोई मैथ्स नंबर नहीं आता है. जैसे जनवरी में कोई मैथ्स नंबर नहीं है. 1947 अगर मैथ्स नंबर है तो फिक्स होना चाहिए. लेकिन 6 महीने, कौन से 6 महीने? तो इसके साथ फॉर लगता है. 12 दिन, 12 डेज के साथ क्या लगेगा? सिंस लगेगा, फॉर लगेगा? बताओ. 12 डेज के साथ क्या लगेगा? सिंस के फॉर. 12 डेज के साथ गाइस क्या आना चाहिए? 12 डेज के साथ फॉर आना चाहिए. वेरी गुड. तो कुछ वर्ड्स फिक्सेशन होती है. सिंस नो मैथ्स नंबर के साथ, फॉर आपका लगेगा जहां पे मैथ्स नंबर है लेकिन फिक्स नहीं है, और सिंस वो भले मैथ्स नंबर के साथ भी लगेगा जो हमें फिक्स्ड आइडेंटिटी देते हैं. जैसे 21st सेंचुरी आ गया आपका, 1947 आ गया आपका, 2 PM आ गया, 4 PM आ गया, फिक्स टाइम ड्यूरेशन है. लेट्स गो विद द 18th वन. 18th कीजिए आप. Neither the principal nor the senior teachers was willing to postpone the parent-teacher meeting despite the forecast of heavy rain. बहुत इजी है ये वाला. क्या डिफरेंस है यहाँ पे? क्या गलती क्या है यहाँ पे? आपके पास क्वेश्चन आ जाता है. नीदर नॉर, आइदर और में एक रूल होता है. किसको देखते हैं हम लोग? नाउन वन को देखते हैं, नाउन टू को देखते हैं. आइदर और, नाइदर नॉर के केस में हम हमेशा नाउन टू को देखते हैं. अगर नाउन टू सिंगुलर है तो पीछे वर्ब सिंगुलर आएगा. अगर नाउन टू प्लूरल है तो पीछे वर्ब भी क्या आ जाएगा? प्लूरल आ जाएगा. तो आपके पास सीनियर टीचर्स हैं तो यहाँ पे वॉज कैसे आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? वर आएगा. राइट, दिस इज एन एरर. गुड वन गाइस. ठीक है, अगला कीजिए. माई एल्डर सिस्टर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर इन एनवायरमेंटल साइंस. वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बताओ क्या एरर लग रहा है आपको? 19 के केस में क्या एरर है?
बी एरर है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी है, आर्टिकल का एरर है यहाँ पे। एरर्स आपके, अगर आपके जेनरिक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हैं तो ऑब्वियसली नहीं प्रॉब्लम आएगी। अब यूनिवर्सिटी है, य की साउंड आती है यहाँ पे, अ यूनिवर्सिटी हो सकता है, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता है, ये गलत है हमारा। वेरी गुड गाइस। अच्छा 20th करो। बिटवीन यू एंड आई द न्यू स्टडी शेड्यूल अपीयर्स मोर प्रैक्टिकल देन द वन वी फॉलोड लास्ट टर्म। क्या आएगा इसमें? बताओ क्या आएगा? एक रूल याद कर लो, जब भी आता है एक प्रेपोजिशन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है या लेट आता है, हमारा जो पीछे प्रोनाउन केस आता है वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। यू एंड आई नहीं होगा, यू एंड मी हो जाएगा। ये एक रूल है आपका जो आपको याद रखना है। जब भी आपका कोई सेंटेंस प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा, याद रखना प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो पीछे जो प्रोनाउन का केस होता है वो सब्जेक्ट में नहीं रहता है, वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी बनता है। तो आंसर क्या गलती है? ए पार्ट में गलती है। इट शुड बी यू एंड मी शुड बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको यू एंड मी वाला? अगला कर लो, दैट इज योर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज 21st क्वेश्चन गाइस। The news of the sudden road closure were announced through the local radio station early in the morning. Tell me what will be the answer now. 21st, guys. The news of sudden road closure were announced through the local radio station early in the morning. अच्छा, न्यूज सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? इफ आई रिमेंबर, द न्यूज इज इंटरेस्टिंग, राइट? व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द डे? तो हम न्यूज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं, तो यहाँ पे हम वर अनाउंस कैसे लगा सकते हैं? क्या आना चाहिए यहाँ पे? वॉज अनाउंस्ड आना चाहिए। तो एरर किस में आ रहा है आपका? बी पार्ट में आपका एरर आ रहा है। सो पार्ट बी इज रॉन्ग ओवर दैट। वेरी गुड। 22nd कीजिए अभी आप। Arun is one of those students who always complete his work before the deadline without requiring repeated reminders. अब इसमें क्या आ जाएगा आपका? What will be the answer, guys? Arun is one of those students करके। वन ऑफ दोज के साथ तो बिल्कुल सही है, ये वाला पार्ट तो हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है। तो एरर कहाँ पे आएगा? वेरी गुड। हु ऑलवेज कंप्लीट देयर वर्क हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए आ गया, हिज नहीं आएगा, देयर आएगा, और कंप्लीट्स नहीं आएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट? इट शुड बी कंप्लीट देयर वर्क, दैट शुड बी द कॉम्बिनेशन। गुड वन, ऑल द स्मार्ट किड्स ओवर देयर। ओके, 23rd कीजिए। During the village meeting, the residents discussed about the shortage of drinking water and proposed several measures to prevent unnecessary wastage. क्या आएगा इसका आंसर? You always say, हम कई बार बोलते हैं ना, there is a line, I will discuss about it. I'll discuss it नहीं बोलते हैं, I will discuss about it. क्योंकि हम बोलते ही गलत हैं, इसलिए हमें वो चीज एरर नहीं लगती है। लेकिन डिस्कस अबाउट बोलना ही गलत है। इट इज नेवर डिस्कस्ड अबाउट, इट इज ऑलवेज डिस्कस्ड द शॉर्टेज। सीधा कॉज आता है, तो हमेशा याद रख लो, आई विल डिस्कस अबाउट इट गलत इंग्लिश है, आई विल डिस्कस इट राइट इंग्लिश है। उसी तरह से डिस्कस के बाद सीधा आपका मैटर आ जाना चाहिए, दैट शुड बी देयर। आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। 23rd नाउ, लेट्स मूव विद 24th करते हैं। क्वेश्चन है, इफ आई हैड रिसीव्ड द वेदर वार्निंग अर्लियर, आई वुड नॉट ट्रेवल थ्रू द माउंटेन पास ड्यूरिंग सच हैवी रेनफॉल। अब ये आपका कंडीशनल आ जाता है आपका। दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस
और ये आपका थर्ड लॉ पे बेस्ड है इंग्लिश के। इंग्लिश के थर्ड लॉ पे आपका ये बेस आ जाता है। बताओ क्या आएगा इसमें? हमेशा याद रखो जो आपका 4 लॉज थे आपके इंग्लिश में, एक था आपका जीरो लॉ, जो था आप यूनिवर्सल ट्रुथ्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट आ जाता है। फर्स्ट आ जाता है आपका लॉ जो हम बहुत ज्यादा बार बोलते हैं, रियलिटी बेस्ड होता है, पॉसिबल है, जिसका कॉम्बिनेशन आ जाता है सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर आ जाता है। नेक्स्ट लॉ इज दैट इज आपका सेकेंड कंडीशनल आ जाता है, जो आपका इमेजिनेशन पे बेस्ड हो जाता है, दैट इज सिंपल पास्ट प्लस एनी ऑफ द मॉडल, इट कैन बी वुड कुड शुड प्लस V1 आ जाता है। और थर्ड कंडीशनल आ जाता है जो आपका रिग्रेट्स पे बेस्ड आता है, जब आप रिग्रेट करते हैं किसी चीजों पे, उसका कॉम्बिनेशन क्या आ जाता है? सबसे पहले आता है पास्ट परफेक्ट, हैड लगा हुआ है, उसके बाद आ जाता है कोई भी मॉडल आ जाता है, वुड कुड शुड, इसके साथ आ जाएगा हैव प्लस V3। अब यहाँ पे हैव भी मिसिंग है, और ट्रैवल का क्या हो जाता है? ट्रैवल्ड हो जाता है। मतलब एरर कहाँ पे है? बी पार्ट में आपका एरर आ जाता है। गो विद द नेक्स्ट वन गाइस, 25th कर लो। द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड to revise the chapter carefully before attempting the questions in the final examination. क्या आएगा इसका आंसर? अब कोई एरर बताओ इस केस पे लग रहा है आपको? The students were advised to revise the chapter carefully before attempting the questions. Any error in this question, guys? D में क्या एरर है? There will be no error in this case. ये सेंटेंस सारा ठीक है आपका. There is no error in this case, right? So there are multiple types of questions. यहाँ पे students were advised आ गया, to revise the chapter carefully आ गया, before attempting the questions आ गया. तो आपके सारे parts आपके क्या हैं? बिल्कुल correct है. So there is no error in this particular question. That goes right. Now you see you are done with a few of the idioms, vocabulary आपने किया है अभी तक टेस्ट, और spotting error किया है. अब करते हैं एक नेक्स्ट मेन पार्ट जो आता है फिल इन द ब्लैंक्स, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट से, आपको इसमें सारे ग्रामर के पार्ट्स आ जाते हैं। पहला फिल कीजिए, व्हाट विल बी द आंसर? माय ब्रदर वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर एंड ही होप्स टू वर्क फॉर डैश ऑर्गेनाइजेशन दैट डिजाइन्स अफोर्डेबल मशीन्स फॉर द फार्मर्स। क्या आ जाएगा इसका आंसर अब आपके पास? व्हाट विल बी द आंसर गाइस ऑफ दिस? आर्टिकल बेस्ड आ जाता है आपके पास। क्या आएगा आर्टिकल बेस्ड आपका? माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम, हमें पता है जब भी हम वॉल्स यूज करेंगे, वॉल साउंड आएगी तो हम एन फिलअप करते हैं, कंसोनेंट साउंड आएगी तो हम क्या फिल करेंगे? ए फिलअप करेंगे, डेफिनेट है तो हम द फिलअप कर देंगे, और अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा तो हम ओमिट कर देंगे आर्टिकल्स को। यही 4 सिनेरियोस बनते हैं। तो पहला सिनेरियो है माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम, एक इंजीनियर बनना चाहता है, पक्का तो नहीं है कौन सा इंजीनियर, तो हम इसमें एन इंजीनियर लगाएंगे, क्योंकि एक ही साउंड है तो एन लग जाएगा, वॉल साउंड लग जाएगा। देन इज एंड ही होप्स टू वर्क डैश ऑर्गेनाइजेशन, और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहता है, अभी हमें कोई स्पेसिफिक नहीं है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेगा, एंड ही होप्स टू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। B1 is the right one, guys. B option is absolutely right because you are not sure what we are talking about, what is the thing all about. तो आप इसमें and लगाओगे दोनों sides पे। Next करते हैं 27. We waited for nearly dash hour before dash bus arrived at the remote roadside stop. अब क्या आएगा? हमने 1 घंटे के लिए वेट किया। HOUR है ये कंसोनेंट से स्टार्ट, लेकिन जब आप बोलते हैं तो R बोलते हैं इसको, एंड द साउंड इज वॉल साउंड, तो आपका एन आर आ जाएगा। बिफोर डैश बस फाइनली अराइव्ड, कोई बस हमने फिक्स बोली है, कोई बस हमारी आई है, बिफोर द बस फाइनली अराइव्ड। तो आंसर क्या आ गया? एन और डी का कॉम्बिनेशन हमारे पास, बी इज द राइट वन इन दिस केस। ठीक है, बी आ जाएगा आपका।
क्योंकि हमें ये पता था बिफोर द बस फाइनली अराइव्ड एट द, हम एक पर्टिकुलर बस के लिए वेट कर रहे हैं, वो बस आ गई और उसके लिए हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा, तो एन आवर एंड द बस. अगला कीजिए. Although Ravi is Dash University students, he still visits Dash school where he completed his secondary education. Although Ravi एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, लेकिन वो कभी कभार स्कूल को भी विजिट करता है ताकि वो सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? अब हमें पता है यूनी के साथ यूनिवर्सिटी य साउंड देता है, तो इसमें तो अ ही लगेगा. ये ऑप्शंस गलत है. हमारे पास बचता ही एक ऑप्शन है, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा. दैट इज अ आपका यूनिवर्सिटी के लिए आ गया. और आपने बोला ही विजिट्स द स्कूल वेयर ही कंप्लीटेड हिज सेकेंडरी एजुकेशन, क्योंकि वहां पे आपने फिक्स स्कूल बता दिया. अदरवाइज आर्टिकल्स का रूल है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आती है, इंस्टीट्यूट आता है, स्कूल आता है, चर्च आता है, हॉस्पिटल आता है, आप कोई भी आर्टिकल फिलअप नहीं करते हैं. नेक्स्ट गो विद द 29th क्वेश्चन. 29 की बात करते हैं अब हम. द प्रिंसिपल इनवाइटेड डैश ऑनेस्ट सोशल वर्कर टू डिलीवर डैश इंस्पायरिंग लेक्चर ऑन कम्युनिटी सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप. क्या जाएगा इसमें आपका? प्रिंसिपल इनवाइटेड, प्रिंसिपल ने किसी ऑनेस्ट सोशल वर्कर को इनवाइट किया. अब यहाँ पे हमें पता है एंड तो हमारा फिक्स आ गया, ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए. हमारे पास बचे हैं ये दो ऑप्शंस. टू डिलीवर डैश इंस्पायरिंग लेक्चर ऑन कम्युनिटी सर्विस, टू डिलीवर द इंस्पायरिंग लेक्चर या टू डिलीवर एन इंस्पायरिंग लेक्चर. हमें पता है किसी लेक्चर की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरिंग an inspiring lecture on community service and responsible citizenship. तो आंसर कौन सा आ गया हमारे पास? बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट कीजिए 30th. बाय द टाइम. अब ये बाय आ जाता है, फ्यूचर आपका आ जाएगा. देखो, जब भी कोई सेंटेंस आपका बाय से स्टार्ट होता है, आपको रूल याद रखना है कि इसके साथ हमेशा आपका फ्यूचर परफेक्ट लगेगा, चाहे आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी. बाय द टाइम आ जाता है या बाय 2030 आ गया, बाय नेक्स्ट ईयर आ गया, कोई भी आपको साथ में टाइम इंटरवल दिया गया है, तो आप इस केस में फ्यूचर परफेक्ट का यूसेज करेंगे. राइट, फ्यूचर परफेक्ट का यूसेज होगा इसके केस में. क्या आएगा इसका आंसर? बाय द टाइम द एग्जामिनेशन बिगिंस नेक्स्ट मंडे, the teachers dash all the answer sheets. So इसमें future perfect एक ही आपका have prepared आपका आंसर आ जाएगा. D would be the right one. (31) कीजिए अब आप. When rescue team reached the snow-covered village, the local volunteers already dash the injured residents to a safer building. क्या आ जाएगा इस केस में अब? क्या आएगा इस केस में बताओ? When the rescue team reached the snow-covered village, the local volunteers dash already. They have already shifted, they had already shifted, were already shifting, या फिर will have already shifted. क्या आ जाएगा इस केस में? It will be had shifted आएगा कि have shifted आएगा? इट विल बी, देखो इसमें इट इज पास्ट टेंस. जब हमारे पास एक साइड पे पास्ट है तो हम दूसरी साइड पे भी पास्ट ही रखेंगे. तो एक साइड पे अगर सिंपल आ जाता है तो पीछे साइड पे हमारा क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट. हैड ऑलरेडी शिफ्टेड आ जाएगा. बी ऑप्शन इज द राइट वन गाइज. ओके, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा. 32nd करते हैं अब हम. मीना dash for the scholarship examination since January and her teachers have noticed
a steady improvement in her writing. अब क्या आएगा इस केस में? मीना डैश फॉर द स्कॉलरशिप. क्या किया मीना ने स्कॉलरशिप के लिए? If this is present side guys, this will also be in the present one. ये भी present में आ जाएगा. ठीक है, तो आपका क्या आएगा? मीना has been preparing since January. क्योंकि since और for जब भी आता है तो आपका perfect tense लगता है present perfect. और continuous में जैसे the class has been going on for last 1 hour. अब क्लास 1 घंटे से चल रही है लेकिन अभी भी चल रही है, तो that is any action which started in the past and is still going on. We use present perfect continuous in that case. उसी तरह से आ जाता है आपका मीना तब से तैयारी कर रही है, तो it will be has been preparing for the scholarship since January आ जाएगा आपका, तो it will be 32 का आपका B ऑप्शन आ गया. Got it? Now let's go with the 33rd. If the weather dash, this is it. If the weather dash clear tomorrow, the school dash the educational tour according to the revised program. क्या आएगा इसका आंसर अब आपको? If the weather, अब ये आ जाता है आपका फर्स्ट कंडीशनल है. फर्स्ट कंडीशनल आ जाता है आपका, जीरो था सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट. फर्स्ट कंडीशनल में क्या आता था? इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर. अब बताओ इस केस में सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर आ जाएगा. कौन सा हमें लग रहा है सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर? 33rd का क्या आ गया हमारे पास? ए ऑप्शन आ गया. सो ए इज द राइट आंसर ऑफ इट. अगला करते हैं 34th. Dash the road was narrow and slippery after the rain. The driver moved carefully and brought every passenger safely to the village. क्या आएगा? कि चाहे बहुत ज्यादा रोड स्लिपरी थी लेकिन जो ड्राइवर था बहुत इजीली सबको घर ले आया. तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? बिकॉज तो रीजन होता है आपके पास. अनलेस दो सिचुएशंस होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो ये भी आंसर नहीं आ सकता है. सो भी हमारा किसी रीजन के लिए आता है, ये भी नहीं आएगा. तो हमारे पास बचा कौन सा? ऑल्दो, जो कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है. ऑल्दो और वाइल हमारे कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज किए जाते हैं कि चाहे ये रीजन था लेकिन ये वाला आ जाएगा. राइट? 35th कर लो अब आप. You cannot improve your written expression dash you revise regularly and learn from the corrections made by your teacher. आप तब तक अपने रिटन एक्सप्रेशंस को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं जब तक आप करेक्शंस मेड बाय योर टीचर, तब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते हैं. क्या आएगा आपका? अभी मैंने बताया कि जब आपके पास दो सिचुएशंस आ जाती हैं, एक आ गई नेगेटिव वाली, एक आ जाती है पॉजिटिव वाली, तो सिचुएशंस के लिए क्यों यूज किया जाता है आपका? दिस इज अनलेस. Clear? Unless is the right answer in this case. Unless is the right one in the 35th. अच्छा 36 क्या आ जाएगा? Dash had the teacher entered the classroom. Dash the student became silent and opened their notebooks. देखो इसमें कॉम्बिनेशंस चेक करो. हार्डली देन है, नो सूनर व्हेन है, नो सूनर देन है और स्कार्सली देन है. रिमेंबर द लॉजिक इज when we are speaking any of the conversation, जब हम अपनी conversation को hardly, scarcely या barely से start करते हैं तो पीछे when आता है. जब हम no sooner से start करते हैं तो than आता है. इन combinations में हमारा सिर्फ एक combination ही ठीक है, बाकी combinations हमारे सारे गलत है. तो आंसर किस में आ सकता है आपका? That is B can be the right answer. ठीक है, तो नो सूनर दैन आपका कॉम्बिनेशन किसमें बन रहा है? बी में बन रहा है. तो आपका आंसर क्या आ गया? बी इज द राइट वन. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर नाउ. गो विथ 37 देन. 37 सॉल्व करो. द स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड डैश 4 ग्रुप्स and were asked to work dash a common project on local water conservation. क्या आएगा इसके केस में आपका? देखो, the students were divided. मैंने आपको इन और इनटू में एक डिफरेंस कराया था
इन यूज होता है जैसे आई एम स्टैंडिंग इन द रूम। लेकिन अगर कोई पर्सन बोलता है, कोई मोशन वाले वर्ब्स होते हैं, जंप करना, स्प्लिटिंग करना, डाइविंग करना या ड्रॉनिंग आ जाता है, द कैट जम्प इनटू द पूल, क्योंकि मोशन आ जाता है। उसी तरह से डिवाइड करना, डिवाइड द टीम इनटू टू आता है, क्योंकि डिवाइड भी क्या आ जाता है, मोशन वर्ब आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स and were asked to work on a common project. तो B आपका आंसर आ जाएगा, which is absolutely right one. अब नेक्स्ट करो, 38 करो आंसर। 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी आपका? थर्टी एट में क्या आएगा? द विलेजर्स वर ग्रेटफुल डैश द वॉलंटियर्स डैश देयर टाइमली असिस्टेंस ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड। क्या आएगा इसमें? आप कभी किसी के ग्रेटफुल तरफ होते हो तो यू ऑलवेज से यू आर ग्रेटफुल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट? यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन, इट इज ऑलवेज यू आर ग्रेटफुल टू द पर्सन। जब आप नेम लेते हैं, वॉलंटियर्स बोलते हैं, कोई भी चीज आती है, तो इट विल बी द विलेजर्स वर ग्रेटफुल टू द वॉलंटियर्स फॉर देयर टाइमली असिस्टेंस ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड्स। तो क्या आ गया आपका आंसर? 38 का बी इज द राइट आंसर ऑफ योर्स, राइट? Next we have is 39. The science teacher insisted dash checking every observation carefully before the students wrote the final conclusion. क्या आएगा इसमें आपका? The science teacher insisted dash checking every observation. What will be the answer, guys? You insist on. These are the phrasal verbs also. Phrasal verbs क्या होते हैं आपके? When there is a verb and then there is a combination of a preposition joined together, that is called as a phrasal verb. You have to remember the phrasal verbs accordingly. You insist on something. You insist on checking that particular thing, right? Next we have is the old temple is situated dash the bank of the river nearly 5 kilometers dash the nearest town. क्या अब आएगा इसमें? The old temple is situated at the bank of river, on the bank of river, in the bank of river या over the bank of river. क्या आएगा इसमें आपका? What will be the answer, guys? हम क्या बोलते हैं? On the bank of river बोलते हैं, at the bank of river या over the bank of river? We always say the old temple is situated not at the bank of river, it is on the bank of river, right? On the bank of river, on किसमें है? एक में ही है, लेकिन बाकी पढ़ लो nearly 5 kilometers. जब आप distance किसी location से बताते हो तो आप क्या use करते हो? From use करते हो at that particular time, right? So it will be the old temple is situated on the bank of river nearly 5 kilometers from the nearest town. Here we sum up 40 questions till now, which were based on all the different parts of speech. आपके ग्रामर में आ जाते हैं, आपके जेनरिक आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, स्पॉटिंग एरर्स आ जाते हैं। ये आपके पहले बेसिक पार्ट्स है। यहाँ तक इफ यू कुड कैलकुलेट योर स्कोर कार्ड, दैट्स अ गुड थिंग कि आपके 40 में से कितने अप्रोक्सीमेट आपके मार्क्स आए हैं। एनी प्रॉब्लम टिल दिस वन, गाइस? 40 तक किसी को प्रॉब्लम? We will left with 2 more topics. And also remember, you can download the documentation right now. The document will be attached with the video itself so that you can practice these questions. And these questions have their own explanation at the last. आपको explanation भी मिल जाएगी, चाहे hard copy पे, चाहे online आप check करना. बाद में आप खुद से questions भी solve कर सकते हैं. Which one you want me to recheck? Yeah, which one? By the time the examination begins next Monday, the teachers dash all the answers, sitting plans, and you can say and attendance records. इसमें by के साथ आपका future perfect आता है बच्चे. What is the doubt in this case? क्या आंसर इसमें? इसमें आपका आ जाएगा will have prepared. Yeah, C is the right one over there.
हाँ, सी ही आना चाहिए. दिस वुड बी, आई एक्सप्लेन यू, हैव प्रिपेयर्ड की जगह इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट बोला था. जब फ्यूचर परफेक्ट लगता है, साथ में रूल भी अप्लाई हो जाता है, तो इसका आंसर विल हैव प्रिपेयर्ड ही बनेगा. हैव प्रिपेयर्ड के साथ फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू फ्यूचर प्लस परफेक्ट आ जाता है, तो विल हैव प्रिपेयर्ड इज अ राइट आंसर. सी ही आएगा. ओके. Okay, yeah, will have prepared. That would be the answer. Any other problem in these questions? 40 तक किसी को कोई problem आई? Any other? Any other question? Any other query which you have right now? Yes or no? कोई problem नहीं आई 40 questions में? ये सारे क्वेश्चन जब आप करोगे, इसके बाद में आपको यू हैव आपके जम्बल्ड हैं और आपका एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन भी आ जाता है. ठीक है. Now you will be downloading this document. The complete answer key is there at the last of the document. ताकि जब आप आंसर की खुद भी सॉल्व करोगे, आपको खुद को भी आइडिया हो जाएगा कि आप कुछ क्वेश्चंस, अगर आपको कोई रूल में प्रॉब्लम है, तो आई हैव गिवन द रूल विद द बेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन आल्सो. राइट. 33rd you want me to repeat? Just a wait. Okay. If the weather dash clear tomorrow, the school dash the educational tour according to the program. देखो ये if conditionals के बेसिस पे है. जो 4 लॉज होते हैं ना कंडीशनल के, जो पहला लॉ आ जाता है, अगर कल ऐसा हुआ तो ये होगा. मतलब हम कॉम्बिनेशन क्या लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का. सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन कहाँ पे है? ए में है. दैट्स इट. इफ द वेदर रिमेन्स क्लियर टुमारो, अगर कल सारा वेदर ठीक रहा तो द स्कूल विल कंडक्ट द एजुकेशनल टूर. तो स्कूल कल एक एजुकेशनल टूर कंडक्ट करेगा. जो 4 लॉज मैंने टेंसेस के बात कराए हैं, कंडीशनल्स कराए हैं, उसको पढ़ लेना. उसके बेसिस में आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इफ वाले सारे क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट वाले हैं, मॉडल्स वाले हैं, टेंसेस और कंडीशनल्स की क्लास भी है, उसको चेक कर लो प्लीज. दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू. 40th भी मैं रिपीट कर देती हूँ आपको. या द ओल्ड टेम्पल इज सिचुएटेड, हम हमेशा बोलते हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर. तो जो ओल्ड टेम्पल है वो बैंक ऑफ रिवर के ऊपर बना हुआ है, नियरली 5 किलोमीटर्स. जब आप डिस्टेंस की बात करते हो तो डिस्टेंस फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस आ जाता है, तो आप फ्रॉम यूज करते हो. तो आंसर आपका आ जाएगा ऑन और फ्रॉम आ जाएगा. अब ये भी क्लियर हो गया? येस और नो बताओ. 40 क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम किसी को? So now we are done with this. You have to solve Jumbled and RCs, and I'll take another class of this where I'll be discussing about these questions. I hope the lecture was crystal clear. Now there is another lecture of yours. So before that, I sum up any doubts for the last time. You can just ask me right now. किसी को कुछ भी पूछना है, your paper is just round the corner. अच्छे से प्रैक्टिस करो. जम्बल और आरसी भी प्रैक्टिस करना, अपने मार्क्स को काउंटर करने की कोशिश करना. कोई प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग्स हैं क्लासेस की, उसको चेक करना. Still any doubts are there, let me know right now. All clear guys? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? Done and dusted? ठीक है. तो we'll meet again in the next lecture and I hope you have the best of it. ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो and get the best of the benefits from all the lectures which are going on. अच्छे से तैयारी करो, रिकॉर्डिंग्स को देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना मत भूलना और जम्बल और आरसी को अच्छे से कर लेना. राइट. I hope you enjoy the lecture and all the best guys. Take care. Have a good day. Bye bye.